Students, we are on the first grammatical topic of our chapter number 9, all is not lost, and this is really important topic as far as English grammar is concerned, and the topic is direct and indirect narrations. Students, English language has two ways to narrate spoken word of a person. यानी कि जब कोई एक बंदा आपको कोई बात कहता है और आपने वो बात किसी और को बतानी है, तो आपके पास दो मेथड हैं किसी की बात किसी दूसरे इंसान को बताने के लिए, और वो दो मेथड कौन से हैं? द वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द अदर इज इनडायरेक्ट स्पीच. ये स्पीचेस जो हैं वो हमेशा किसी की बात किसी और को बताने के लिए यूज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर and I am teaching you in a classroom. Suddenly principal calls me. Principal मुझे बुलाते हैं, and in the office or we can say in the office he told me that I want to meet your students. जब मैं वापस क्लास में आया, अब यही बात आपको बताने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं या दो तरीके. वन इज डायरेक्ट स्पीच, और वी कैन से डायरेक्ट नरेशन, और वी कैन से डायरेक्ट मेथड, एंड द अदर इज इनडायरेक्ट स्पीच, और वी कैन से इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट स्पीच में मैं वही एग्जैक्ट कोटेड वर्ड्स आपके सामने कह दूंगा. जब मैं क्लास में वापस आया तो मैं कहूंगा कि मिस्टर प्रिंसिपल सैड आई वॉन्ट टू मीट योर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स थे जो प्रिंसिपल ने अपने मुंह से निकाले थे. मैंने एग्जैक्टली वही आपको आपकी क्लास में आपके बता दिए. अब ये तो वो हो गया जब हम एग्जैक्टली किसी के वही वर्ड्स कोट करते हैं, हम अपने आप को उन वर्ड्स में नहीं लाते. इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. लेकिन दूसरा मेथड ये है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं. उसमें मैं कह सकता हूं कि मिस्टर प्रिंसिपल सेड दैट ही वांट टू मीट माय स्टूडेंट्स. अब मैंने एग्जैक्ट वर्ड कोट नहीं किए, लेकिन मैंने कुछ चेंजेस की, प्रोनाउंस में चेंजेस की, कुछ टेंस में चेंजेस की. तो ये चेंजेस हम इनडायरेक्ट में स्पीच में करते हैं. So we can say that these two ways are also used to simply narrate the spoken words of one person to another's. Now, for understanding direct and indirect speeches, you must know the differences between these two things. First of all, direct speech, indirect speech, the actual words of the speaker are always quoted in inverted commas, or we can say quotation marks. The exact words of the speaker are enclosed in inverted commas or quotation marks. There is always a comma or colon after the word said that introduce the spoken words. It means कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में कोई बात करेंगे, किसी दूसरे बंदे की कोई बात हम लोग करेंगे या एग्जैक्ट वर्ड कोट करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच में, तो वो वर्ड्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में होंगे. और इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले या तो कॉमा होगा या फिर सेमी कॉलन होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड कॉमा and then inverted commas start, I am going to school, inverted commas closed or quotation mark closed. In indirect speech, the actual words of the speaker are changed. The reason for change in actual word is that the actual words have been spoken in past, and hence so that we are narrating it in present will require change in the tense of the actual word. अब indirect speech में क्योंकि जो स्पीकर था, जब मैं ऑफिस में गया तो वो पास्ट की बात होगी, वो कहीं पास्ट में प्रिंसिपल साहब ने बोला था कि मैं आपके स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूं. जब ये बात मैं इनडायरेक्ट वे में कहूंगा तो वो मैं प्रेजेंट में कहूंगा. अभी आप मेरे सामने बैठे हैं क्लासरूम में, तो जब ये बात मैं आपको बताऊंगा तो अब प्रेजेंट में बताऊंगा. तो हम उन इन्वर्टेड कॉमर्स को इनडायरेक्ट स्पीच में ख़त्म कर देते हैं. और क्योंकि वो क्यों ख़त्म करते हैं? क्योंकि उसको एक चेंज ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. एंड सेकेंडली, देयर इज़ अ चेंज इन प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली. The word of the speaker are not enclosed in inverted commas or quotation marks. The word that
or we can say the conjunction that will be used before the spoken words of the speaker. For example, direct speech. He said, I am going to school. And when we convert this sentence into indirect speech, it can be written in this way, that he said that he was going to school. Students, now converting direct speech into indirect speech, before learning the rules for conversion of direct speech into indirect speech, you must learn the two important components of direct speech. स्टूडेंट डायरेक्ट स्पीच में दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स पे वो कंप्रोमाइज करता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच एंड द अदर इज रिपोर्टेड स्पीच. In reporting speech, the verb of the first sentence, for example, she said, he said, she says, they said, they say, etc., before the actual words of the speaker is called reporting verb, or we can say a reporting speech. For example, she said, I am listening to the music. Now, this portion of this example, she said, is the reporting speech. Now coming towards the reported speech, the second sentence that is enclosed in inverted commas or quotation mark is called reported speech. Students, वो sentence जो कि quotation mark या inverted commas में होता है, उसको हम reported speech कहते हैं. जो कि actual words होते हैं speaker के, उसको हम reported speech कहते हैं. For example, he said, I am listening to the music. We have early discussed that she said is reporting verb or reporting speech, and the next sentence, I am listening to the music, is reported speech. So these are the two components. We can easily divide a sentence into two components, that reporting speech and reported speech.